ये गर्मी की वजह से पानी के फव्वारे लगाए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ठंडा करने के लिए। ये रेस्टोरेंट है, जू शॉप इसके साथ, और ये दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, यहाँ से अंदर आती हैं। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट टूर ऑफ द जू। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। दिस इज यासर हुसैन रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम मेड्रिड जू। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं एनिमल्स। आए आपको एनिमल्स दिखाते हैं वन बाय वन। आई एम गोना टेक यू ऑल द वे अराउंड टू दिस जू। ये लोग तस्वीरें बना रहे हैं जिराफ के साथ। ये वही मोर चमकते पर वाले हैं जो हमने किताबों में पढ़ा था। ये टॉयलेट्स हैं जो कि बिल्कुल साफ सुथरे लग रही हैं। सत्यानाश हो गया गर्मी से। ये देखिए टॉयलेट साफ हो बिल्कुल। स्वाद आ गया बच्चों। ये हिप्पो का है, हिप्पोपोटेमस अफ्रीका। और वो सामने वो जो है वो घास खा रही है। हाँ वो निकला है। ये गैंडे आ गए और गैंडे। Guys, these are the dangerous ones. Yeah, they bite. They do bite. Someone throw something. Did you see that? Someone throw something on that one. वो कुछ के पास बच्चे भी हैं। ये शायद उसकी बीवी है जो से लड़ रही है। कुछ चाहिए हैं? मम दे मी मम दे मम। ये बच्चों के लिए छोटा सा प्ले एरिया भी है,
शॉप्स वगैरह सारी, और इस साइड पे ये डॉल्फिन। ये बैठे हुए। हेलो फ्रेंड्स, आजा आजा, कम हियर। ये ब्रश कर रहे हैं मुस्कुराहट। Yes. कछुए मोर के साथ। Hey, see? Quiero que sepáis una cosa, y es que estos saltos que acabamos de ver pueden realizarlos gracias a la fuerza que les proporciona su aleta caudal, cuyo movimiento, si os dais cuenta, es así, de arriba hacia abajo. A diferencia de los peces, que esta aleta la mueven de izquierda a derecha. Ahora que ya hemos hablado de la aleta caudal y sus funciones, vamos a conocer las demás. Y la aleta dorsal es la que tienen sobre la espalda. Esa les permite mantener el equilibrio incluso cuando nadan a grandes velocidades. Como veis, el cuerpo de los delfines ha evolucionado hasta adquirir una forma totalmente hidrodinámica. Fijaros, todos los dientes de los delfines, todos tienen la misma forma. Y los utilizan únicamente para atrapar a sus presas porque ellos no mastican el alimento. Para poder adaptarse mejor a la vida acuática, su nariz se ha desplazado a la parte superior de la cabeza. Ya hemos dicho, ese agujero que vemos que tienen en... Oh yes, sea lion. Two. गर्मी को कम करने के लिए ये फव्वारे लगे हैं मैंने। This is taxi outside the zoo.